Hi Alok, Yeah, hi. how are you? Yeah, I'm doing good. Okay. Am I audible properly? Yeah, you are audible. Okay. Can you please tell me about yourself? Yeah, I'm Alok. I have more than 3.5 years of experience in software testing, and in that 2.5 years in automation, and around more than 1 year in manual testing. In automation testing, mainly I have worked in Java and Selenium. Apart from that, I have used TestNG, Maven, Jenkins, Apache POI. I have experience in page object model, automation framework, its designing, and I have experience in API testing and API automation also using Java and REST assured. Okay, very good. And what about your qualifications? Yeah, I have done graduation. Okay. So, can we start? Yeah, we can. Okay, sure. Don't be nervous, okay? Yes. Okay, let's start with basic. Uh, what is regression testing? Yeah, in regression testing, basically, when there is any change in application, in that case, we are verifying that change, and after that, we are testing the whole application again to make sure that these changes has not any adverse defect on the already working or existing functionality. Okay. And can you tell me the difference between smoke testing and regression testing? Yeah, smoke testing basically when we are getting the build. To first of all, we are performing the smoke testing. In smoke testing, we are testing the main business functionality of the application. And in regression, basically, we are testing the we are testing the function the complete application to make sure that any change has not any adverse or impact on the application. Okay. Let's suppose you have a software to test and there is a new feature gone live yesterday. So what do you prefer the most of the testing? Do you prefer smoke testing first or do you prefer regression testing first? First, I will perform smoke testing. First you will perform smoke testing. Smoke testing, then I will Why is test. that? Sorry. Why is that? Yeah, basically, because that new functionality, or you can say new change, can impact the main business functionality of the application. Basically, smoke is necessary because in this we are testing the main business functionality of the application. So it is necessary. Suppose we have to, there is changes in any functionality of any application, but it is not, and due to that change, maybe it can happen like it is just breaking any main business functionality that is very crucial for the business. So that's why. Okay. Uh, can you tell me any of the model of SDLC? Yeah, we are using, like right now I'm using agile. Agile model. Okay. Tell me about it. Sorry. Tell me about it. What is Agile Yeah, model? in agile, basically, there is sprints, and sprint size can be 1 week to 4 week. In our project, it is 3 weeks. And in agile, basically, we believe in less documentation and collaboration between the team. And in agile, we are able to tackle the changes, frequent changes that is coming in application. And in agile, basically, it starts from sprint planning meeting, and after that, on daily basis, we are doing a scrum meeting where we are just providing our status, what exactly we have done yesterday, what we are doing today, after completing this task, what I am going to do, and if there is any blocker, then discussing about that. And after that, in mid of the sprint, there is a meeting, mid sprint review. There we are just checking where exactly we will be able to complete these stories, or you can say task or not. And according to that, we are planning the things. And in last sprint review meeting, and after that, sprint retrospective meeting. And the process is same, like first of all, we are just analyzing the requirement,
and after that we are creating the high level scenario, then test cases, and then we are executing those test cases on application when developers you can say build that functionality. Okay. Can you, you told me that you have 2.8 years of experience in automation, right? Yeah, 3.8 years, yeah. In automation, yeah, around 2.5 years. Around 2.5 years, right? Yes. Okay. So, एक basic question पूछता हूँ कि what are locators? Yeah, they are locators to recognize the elements. There are multiple locators in Selenium like XPath, CSS selector, ID, name, and class, tag. So there are multiple link text, partial link text. Okay. And what are experts? Yeah, XPath is to locate the element, and in XPath it starts from double slash, and we can use any attribute in XPath. We can use inner text, we can use parent, child, descendant, ancestors, following sibling, preceding sibling to identify the elements, and we can use contains also, starts with also. Okay. Uh, Acha, tell me something. In XPath, we use double slash and single slash as well. Can you define why we are using single slash and why we are using double slash? Yeah, single slash when we using, then it is talking about parent-child relation. Double slash when we are using, then it is talking about parent-descendant relation. So child means immediate child, but descendant means it can be child, it can be grandchild, it can be great grandchild, so on. So you are saying descendants child के लिए हम लोग double slash use करते हैं, right? Okay. And और वैसे भी जैसे अगर हम एब्सोल्यूट एक्सपाथ जब होता है वो भी स्लैश से ही होता है, क्योंकि वो स्लैश स्लैश HTML स्लैश बॉडी इस तरह से, तो जब हम एब्सोल्यूट एक्सपाथ लिखते हैं तब भी हम सिंगल स्लैश का यूज करते हैं. ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड. आपने डिड यू यूज टेस्टएनजी? यस. ओके, तो टेस्टएनजी के नोटेशंस आप मेरे को बता सकते हैं? हाँ, बिफोर मेथड एट द रेट टेस्ट. हाउ मेनी नोटेशंस आर इन द टेस्टएनजी? टोटल 8 9, yeah, 13, 11 12 annotations. 11. Yeah, 11 12, not exactly the number, but I know the name. Okay. Be- can you tell me some of them? yes, like before suit, before test, before class, before method, at the rate test, at the after, at the rate test, at the rate after method. थोड़ा सा मैं आपको पूछना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी चाहिए साथ के साथ. बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट आप जो बोल रहे हो, दैट इज करेक्ट, बट व्हाट बिफोर सूट डू? Yeah, before suit is running initially in the when we are running, then first of all it is running before suit, before the whole suit, and after that it is running before test. Before test is you can say related with the test tag of testng.xml. So whatever class is mentioned in test tag, before all before test will run, and after that before class that will run before the test class. After that before method that runs before the test case, and then at the rate test means test case, and after that after method, after the test case, after class, after the test class, after test, after the test tag, and after suit in last. And there can be other annotations also, like at the rate parameters to pass the parameter from testng.xml to test case, and there is one more at the rate data provider. We use it to read the to provide the data to the test cases. That is correct. And what? ठीक है, that is good. Open your notepad, share your screen and open your notepad. मैं एक छोटा सा आपको प्रोग्राम देता हूँ, आप मेरे को बताओ उसको. ठीक है? Okay.
मिनट। एक एरे है, हम्म 1 2 3 4 5, सिंपल एरे है। ओके, कॉमा 99, 99 और 9,9। 9 कॉमा 9, कॉमा 2 2, मतलब 2 कॉमा 2 एंड कॉमा 6। ओके, ये एक एरे है, हाँ राइट। ठीक है। नाउ आई वांट कि आप इसमें से इस एरे को रिवर्स करें और इसमें जो रिपीटेड एरेज हैं उनको प्रिंट करें सॉर्ट करके। रिपीटेड नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं। सॉर्ट करना है पहले एरे को, फिर एरे को रिवर्स करना है और रिपीटेड नंबर्स को प्रिंट भी करना है। कैन यू डू दैट? या आई कैन। ओके, गुड। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे आप बताओ कि इसमें आप क्या अप्रोच यूज करोगे। सबसे पहले तो हम शॉर्टिंग करेंगे, ओके, और शॉर्टिंग करने के बाद हमें अगर रिवर्स प्रिंट करना होगा तो हम एक निगेटिव लूप लगाएंगे, रिवर्स लूप लगाएंगे और एक एक करके नंबर्स प्रिंट कर देंगे। और फिर जब हमें डुप्लीकेट फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए मतलब एक तो तरीका ये है कि हम डायरेक्टली इनको सेट में एक एक करके डालते चले जाएं, अपने आप डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हम खुद से उसका डुप्लीकेट रिमूव करने का लॉजिक लिखें। चलो ठीक है, लिख देता हूँ, बताया मुझे।
Yeah, so this code will sort it. After that, ऊपर आपने सॉर्टिंग कर दिया है। हाँ, ठीक है, लाइब्रेरी में स्टोर करा दिया, ठीक है। yes, yeah. So this will reverse the array. Okay. हाँ, आप मेरे को पूरा लिखो, मैं लिखूंगा। So we will have to print duplicate numbers or only non-duplicate numbers. डुप्लीकेट वैल्यूज। Yeah, like this. आप मुझे बताओगे कि एंड में जो आपने लूप फॉर लूप लगाया है, इसमें से आपका रिवर्स का कौन सा था आप जो बता रहे हो? ये रिवर्स का है, और ये नीचे पूरा प्रिंट जो पूरा ये वाला किस लिए लिखा है आपने? ये डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए। डुप्लीकेट को फाइंड आउट करने के लिए और उसको प्रिंट कराने के प्रिंट लिए, कर, हाँ। अच्छा अच्छा, आपने लूप के अंदर लूप चलाया है और फिर उसको बोला है। ठीक है ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा है बट चलेगा, कूल है। थैंक यू।
ठीक है, कूल है, बढ़िया। स्माइस, आपको SQL आता है? एसक्यूएल मतलब अभी तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ पहले यूज किया है। मतलब अगर मैं कुछ पूछूं तो आप बता पाओगे? हाँ मतलब क्वेरीज, जैसे ज्वाइंस और ये सब कुछ ये यूज किया है। ओके, यूज किया है। तो हाँ। मैं आपको एक टेबल देता हूँ चैट पे, हम्म। ठीक है ना? अ, ये दो टेबल है, हम्म। नेम, नेम करके टेबल है, और एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोड डाल देना जो भी हो, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि इन दोनों टेबल में से टेबल, हाँ, नेम टेबल में कॉलम नेम है, एक तो नेम करके कॉलम है, हम्म। राइट? हम्म। दूसरा कॉलम है हमारा आईडी करके, हम्म। और तीसरा है हमारा एड्रेस करके। नेम आईडी एड्रेस। हाँ, ओके। ये पहले कॉलम, ये पहले टेबल की कॉलम है, ठीक है। ठीक है? दूसरे में हमारा क्या है, दूसरे टेबल की कॉलम में हमारा फर्स्ट हमारा हो जाएगा एम्प्लॉय कोड। हम्म। एक मिनट, पहला कॉलम, दूसरा हो जाएगा हमारा आईडी, हम्म। राइट? और तीसरा हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंट। ये तीन कॉलम दूसरे टेबल में है, ओके। ठीक है? हम्म। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, हाँ ठीक है। हाँ। मैं चाहता हूं कि आप करो कि एक पर्टिकुलर आईडी की एक एम्प्लॉय का डेटा निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे इसमें से नेम के साथ? नेम के साथ तो इसके लिए हम इनर ज्वाइन लगाएंगे। हाँ, आप लिख के देखो। लाइक दिस। तो फिर इसके आगे आप क्या रखोगे? आपको पर्टिकुलर आपको वो निकालना है तो नेम, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर नेम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसमें? लेट्स सपोज कि आपके पास, आपको एक नेम फाइंड करना है, लेट्स सपोज अपना नाम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? इस टेबल में से आपका एक टेबल में नेम पड़ा होगा, ओके, टेबल में नेम पड़ा अगर, अच्छा इसमें नेम, ओके। टेबल में ऑब्वियसली डेटा में हाँ डेटा होगा हाँ बहुत हाँ सारा, उस हाँ। पर्टिकुलर डेटा, एक इंडिविजुअल का डेटा निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? तो फिर एंड लगाएंगे, एंड नेम इक्वल्स टू समथिंग। एंड नेम इज इक्वल टू समथिंग, आर यू श्योर? आई एम नॉट कंफर्म, मे बी वेयर कंडीशन, वेयर नेम इक्वल्स टू दिस, ओके, ठीक है। or we can use one more thing, sorry, here we can use sub queries. लाइक,
like this. ओके, और अगर मैं सबको नहीं यूज करनी और उसी पर्टिकुलर टेबल से फाइंड करना तो कैसे करेंगे? Yeah, we can use having or something in that case. I'm not sure. हैविंग इक्वल्स टू स्लॉप, मतलब ऐसा कोई प्रश्न मतलब है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं. I'm not sure about this. देखो बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक बार करता हूँ. अभी यार गलत सेंड हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो मैं आपको इसी में ठीक करा देता हूँ, आपकी वाली क्वेरी में. सबसे पहले तो आपको डेटाबेस को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, जैसे कि सॉरी, इसमें क्या करा है आपने कि इसमें आपने इनर जॉइन तो लगाया है, राइट, बट इनर जॉइन में कभी भी स्पेस नहीं होता, राइट. पहली मिस्टेक ये थी आपकी. दूसरी, आप इसमें जो आपने सब क्वेरीज लगाई है वो हटा दो जरा. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक इलियास देना होता है अपने टेबल्स का, जो आपने नहीं दिया है दोनों टेबल्स में. नेम तो टेबल का नाम, जैसे आपने लिखा नेम और आईडी, तो नेम और आईडी फर्स्ट एक कॉलम में आ जाएंगे जब आप एग्जीक्यूट करोगे क्वेरी को, राइट. फिर आपका फ्रॉम, अब आपने फ्रॉम लगा दिया है और आपको ओनली नेम और आईडी चाहिए था इसलिए आपने ये लगाया है, या फिर आपको सारा डेटा चाहिए? नहीं, हमें नेम और हाँ हमें आईडी चाहिए इसलिए आपने ये लगाया, राइट. ठीक है. दूसरा, आपको अपने डेटाबेस का एलियास देना चाहिए था, जैसे कि फ्रॉम नेम, नेम में क्या नेम एज, या नेम में आपको एनए लिख देना चाहिए था या एनएम लिख देना चाहिए था, और उसके आगे नो लॉग यूज करना चाहिए था दोनों टेबल्स के लिए. फिर एलियास आपको यूज करना चाहिए था कि nm डॉट आई डी इजिकल्स टू एम्प्लॉय के लिए भी कोई mp डॉट आई डी करके. फिर मैंने आपसे बोला था कि एक पर्टिकुलर नेम को फाइंड करना है, आलोक, लेट्स सपोज आपका नेम फाइंड करना है, तो आपको वेयर का यूज करना था, वेयर आलोक वेयर नेम इजिकल्स टू, या फिर आईडी इजिकल्स टू. अब आपको नेम से फाइंड करना है तो नेम, आप नेम लगाओगे कि नेम इजिकल्स टू आलोक. लेट्स सपोज डेटाबेस में आलोक नाम के 10 एंट्री और पड़ी है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद आप एंड यूज करोगे पर्टिकुलर आईडी के थ्रू. ओके, गॉट इट. चलो, वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, बस मैं आपसे दो चीज और पूछना चाहूंगा. व्हाई वी आर यूजिंग CI/CD? CI/CD we are using to execute our scripts. So even execute, basically CI/CD developers are using to deploy the things, and we are we testers are also developers. Yes, we are using to means run the scripts automatically, either through scheduling or through any other condition. So it is like continuous integration. So it can also happen like when developers pushes the code on the GitHub, automatically our automation will start running. So and even it will not execute on our machine. It will automatically start running when a developer or tester coded push the code. Yeah, for that basically we will require means in developer's GitHub account, and there is a thing, I'm just hook URL. There is a hook URL of the build. That hook URL we will add in developer's GitHub account. So when they will push the code, automatically it will hook our. My question is, by pushing the code on the gate
or on the server, not on the local machine, by pushing the code on the server, how this how that particular code automatically runs. You have to maintain a job over there, na? Yeah. Right? Yes. Without maintaining a job, you can't run your code automatically. You can't run your scripts automatically. Yes, and even there was one thing I have read, like that is one thing, that hook URL. With every job there is a hook URL, and that hook URL, if we will add with in developers GitHub account, and and for that basically developers then whenever developer push the code in on that you can say GitHub account through that app, and then automatically it will hook the through hook URL, it will initiate the Jenkins, and automatically Jenkins will start running. Okay. Uh, can you tell me about the statuses? Yes. Why we are using Git? Why we are using post? Why we are using put? And why we are using delete in APIs? Yeah, get we are using to fetch the information from server. Post we are Okay. using to create the data on server. Put we are Okay. using to update the data, and delete we are using to delete the data. Okay. Can you tell me the status of 304? Yeah. What is the meaning of 304? Yeah, 300 for redirection, and when we are getting 3 means it is like it is something not modified. Okay. And what about 401? It is authentication failure, when our credentials are incorrect and we are trying to hit And the 4 to server. 9? 4 to 9 is too many requests. Okay. And 502? Bad gateway. Okay. And I guess that's all. Alok, that's all from my side. And all the best for your other rounds as well. Thank Very you. good. Okay, no issues. Okay, thank you. Okay. Okay. Okay, Alok. Thank you. Nice to meet you. Is there any other question in your mind you want to ask to me? No, not now. Okay. Okay. Thank you, Alok.